সোনা রঙে জীবনের খেলা আমাদের চুমুকের আছে এইখানে সন্ধ্যাবেলা, 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 এইখানে সন্ধ্যাবেলা। এইখানে সন্ধ্যাবেলা। এইখানে সন্ধ্যাবেলা।
Hello, am I audible? বেলা এখানে সন্ধে Hello everyone. Welcome to our Dhronas platform, the most trusted platform for your preparation of government job exams. Today, this is your science class. So I'm going to discuss about the syllabus of your Railway Group D exam and as well as the question patterns. कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने कैसे कवर करने and how the question patterns Hello? are. Am I audible? So let's start today's class. So first, our syllabus is like in your science, you have to read the physics, chemistry, and biology. Okay. বেলা এখানে সন্ধে Hello everyone. So first I'm going to tell you what are the important topics in physics you have to cover. Okay. The first chapter is unit and measurement. Welcome to our Dhronas platform, the most trusted platform for your preparation of government job exams. Today, this is your science class. So I'm going to discuss about the syllabus of your Railway Group D exam and as well as the question patterns. कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने कैसे कवर करने and how the question patterns Hello? are. Am I audible? So let's start today's class. So first, our syllabus is like in your science, you have to read the physics, chemistry, and biology. Okay. বেলা এখানে সন্ধে You need to read about everyone, the scalar vector quantity, then like the units of different types of physical quantities, SI unit system, then CGS unit system, FPS, MKS. इसके बारे So में आप first लोगों I'm को going to पढ़ना है, tell ठीक you है? What are the important topics in physics you have to cover? Okay. The first chapter is unit and measurement. Welcome to our Dhronas platform, the most trusted platform for your preparation of government job exams. Today, this is your science class. So I'm going to discuss about the syllabus of your Railway Group D exam and as well as the next chapter will be on question motion patterns.
So कौन in से this टॉपिक्स आपको chapter, कवर करने, कैसे कवर करने, and how the question patterns hello, are. Am I audible? So let's start today's class. So first, our syllabus is like in your science, you have to read the physics, chemistry, and biology. Okay. এখানে সন্ধে আমিও বুঝতে পারছি না। You need to read Hello about everyone. the scalar vector quantity, বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। then like the units of different types of physical quantities, SI unit system, then CGS unit system, FPS, MKS. इसके बारे So में आप first लोगों I'm को going to पढ़ना tell है, you ठीक है? What are the important topics in physics you have to cover? Okay. The first chapter is unit and measurements. Welcome to our Dhronas platform, the most trusted platform for your preparation of government job exams. বন্ধ করে দাও, এটা বন্ধ করো। এদিকে এদিকে নিয়ে যাও, আমাকে দেখাও। মোস্ট প্রবলি ডেস্কটপ সাউন্ড চলছে, ডেস্কটপ ইউটিউবটা তো বন্ধ হয়ে গেল। ইউটিউবটা তো বন্ধ হয়ে গেল। Okay, so your next chapter will be motion. In your motion, is it visible? Sorry, some technical errors are there, so थोड़ा सा hindrance हो रहा है class में. I'm extremely sorry for that. So in this chapter in motion, you need to read about the different types of like parameters for motion, terms related to motion, speed, then velocity, then distance, displacement, and like this.
then acceleration. These are your, and of course the parameters that controls the straight line motion and circular motion. आपके straight line motion और circular motion में difference क्या है, उनके properties क्या है, you need to learn about them also. ठीक है? Now the next chapter will be laws of motion. Now the next chapter will be laws of motion. Now in this section, Newton's laws of motion. ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस विल कम. Next topic of this physics syllabus is your like gravitational force or gravity. Gravitational force or gravity. Here also you need to learn about the Newton's law of motion, then Kepler's law, Newton's law of gravitation, and Kepler's law. Now, after these physics chapters, you need to learn about like work, power, energy. The chapter which is related to work, power, energy. Okay. And then static and electricity, static and current, both. Then magnetism. Then some mechanical properties of fluid and solid, mechanical properties of solid and liquid. So these are your basic important chapters. Another chapter which is important for you, that is thermodynamics, okay, which is related to heat, temperature. So thermodynamics, laws of thermodynamics and all you need to read.
So these are your important physics chapter syllabus which you have to read thoroughly, जहाँ से आपके questions आ सकते हैं. I will also discuss you about the question patterns and all. So some samples question यहाँ पे होंगे, इस class में discussion होंगे. Next let's discuss about the next subject, chemistry. ठीक है. नाउ केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो ध्यान से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है दैट इज योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ना है. यहाँ पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट यू नीड टू लर्न एटॉमिक थ्योरी, देन एटॉमिक मॉडल्स given by Thomson, Rutherford, Niels Bohr, then atomic sub particles like electron, proton और neutron के properties. Then you need to learn about the electron configuration, little bit of electron configuration. Then valency, valence electron. These concepts are required for the basics of your chemistry. ठीक है. ये important topics है, sub topics है. In this comes under atoms and molecules chapter. Then you need to learn chemical reactions and chemical bonds. Different types of chemical reactions जैसे combination reaction, exothermic reaction, endothermic reaction, then precipitation reaction. ठीक है. So the different types of reactions you need to learn. Then periodic table, basic of periodic table. Then acid, base, salt. Next in chemistry, you need to read about metals and non-metals, उनके compounds, उनके chemical reactions. सबसे ज्यादा chemistry में जो question patterns है that is related the compounds which we use in our everyday life. हर दिन हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी हम लोग मटेरियल्स यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड्स क्या है, उनका निकनेम्स क्या है, ये सबसे कॉमन पैटर्न है केमिस्ट्री का. ठीक है. उसके साथ साथ आपके पास वो एटम्स मॉलिक्यूल्स चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम पीरियोडिक टेबल एंड बेसिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉट इन डिटेल्स. देन दूसरे चैप्टर है जैसे कि गैस लॉज. यू नीड टू know about the Charles law, Boyle's law, Avogadro's law, Gay-Lussac's law. ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है. Universal gas law. ठीक है. So this is the basic of your chemistry chapter, overall overview. Then we can go for biology syllabus discussion. Next, biology में आपको जो पढ़ना है, first you need to learn about the cell structure, जो आपके एकदम basic है. Cell structure के बाद you need to learn about the cell cycle and cell division. ठीक है. कितने तरीके के cell division हो सकते हैं and what are the stages of cell cycle and cell division. So these two means actually the cytology part. Okay, cell cycle and cell division. Now the Mendelian genetics next. इसमें आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, देन लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, इसके किसके वजह से क्या होता है, दिस हिमोफीलिया या फिर थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनका रीजन क्या है, सिर्फ आपके बेसिक्स पढ़ने. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विल बी बायोडाइवर्सिटी. ये टॉपिक आपको कवर करना है जिसमें आपका क्या है, एनिमल एंड प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड. ओके, इन सिंपल टर्म्स. नेक्स्ट द बिगर पोर्शन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपको
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ऑल द सिस्टम्स you need to learn in brief the overall brief information about human physiology. Another topic you need to cover in biology is plant physiology and plant processes like plant growth and development, plant morphology, then आपके plant reproduction, then plant tropism. This type of small topics in case of plants you need to cover. ठीक है. दूसरा आपका important part of biology है health and disease formation से, जो आपकी human physiology के अंदर ही आता है. हेल्थ एंड डिजीज बोल के एक चैप्टर होता है जिसमें कौन से बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आता है. ठीक है. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट योर साइंस सिलेबस. आपको क्लास 10 तक जो सिलेबस पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस यू नीड टू फॉलो. So basics of the chapter you need to learn for your exam. ठीक है. So let's discuss some sample questions for your exams so that you can get the idea about the exams pattern, questions pattern. First subject is your physics. Physics में आपका first question जो है वो आपके unit and measurement chapter से ही है. So the first question is so the commercial unit of electrical energy. Commercial unit of electrical energy, इसका electrical unit energy का commercial unit क्या है? The unit is kilowatt hour. ठीक है. Now watt किसका ऐसा unit है? Watt is the unit of power. Calorie is the unit of heat energy and joule is the unit of work. ठीक है. तो ये unit and measurement chapter का है. But throughout the physics syllabus जो भी आप लोग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा, सो यू नीड टू लर्न अबाउट कि आपको सारे चैप्टर्स में से यूनिट्स के बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा. जो भी फिजिकल क्वांटिटी यू नीड टू लर्न आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज hello, what is actually the unit of power? ठीक है. What is the SI unit of power? And kilowatt hour is electrical energy का commercial unit है. It's okay, not an issue. We will discuss in our physics syllabus. So question number 2, the gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in. अगर आप gravitational फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो तो वो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर इट एज पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन योर वर्क पावर एनर्जी चैप्टर. ठीक है. सो किसी भी चीज को अगर आप ग्राउंड के अबव लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh. नाउ दिस मीन्स you are multiplied mass by gravitational acceleration by the height. ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है तो जितना हाइट बढ़ेगा आपका ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ेगा. दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन शुड बी लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट ऑपोजिट ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज साउंड कैन ट्रांसमिट फ्रॉम. दिस इज द चैप्टर फ्रॉम साउंड वेव. साउंड और लाइट ये फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साउंड वेव एंड लाइट ऑप्टिक्स. साउंड आपके एक ऐसा वेव है जो विदाउट मीडियम कैन नॉट प्रोपागेट. साउंड विदाउट मीडियम नहीं जा सकते. विदाउट मीडियम कैन नॉट प्रोपागेट. सो साउंड प्रोपागेशन के लिए आपको हर मीडियम की जरूरत है. सॉलिड, गैस, फ्लूइड. फ्लूइड मीन्स गैस एंड लिक्विड बोथ. फ्लूइड का मतलब है गैस एंड लिक्विड बोथ. फ्लूइड मीन्स विच द मैटर कैन फ्लो. ठीक है. सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव.
साउंड का आंसर है ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट, ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास बाय वॉल्यूम। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मास बाय वॉल्यूम कौन से क्वांटिटी को मेजर करता है? मास बाय वॉल्यूम मीन्स, कैन यू टेल मी? Correct, density. Mass by volume is density. So what is the unit of density in SI system? यहाँ पे और भी तीन आपके क्वांटिटीज है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम है, नो, इट्स नॉट किलोग्राम। किलोग्राम तो मास का यूनिट है, मास मीन्स एसआई यूनिट है आपका केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? Whenever you calculate volume, you actually multiply three sides, है ना? Side into side into side. That means आप length measure कर रहे हो, so volume को हम लोग इसीलिए मीटर क्यूब बोलते हैं। So density का क्या होगा? Mass by volume, that means kg by per meter cube. This is the SI unit of density. ठीक है? kg per meter cube. SI unit of mass is kg. वॉल्यूम का, वॉल्यूम जब हम लोग मेजर करते हैं तब तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम थ्री लेंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब। सो दैट मीन्स केजी पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। मोमेंटम मीन्स क्या? मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मीनिंग है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। सो मास का यूनिट क्या है? मास इज केजी। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का न्यूटन, वेरी गुड, फोर्स इज न्यूटन। और इनर्शिया इज द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर, कि कोई भी चेंज को वो अपोज करे, है ना, रेजिस्ट करे, दैट इज इनर्शिया। So this will be discussed in your laws of motion chapter. Now moving on to the next question, question number 5. Second law of motion is related to Newton's second law किसके साथ related है? Correct, momentum. Second law of motion is related to momentum. The amount of force you are applying to an object, the rate of change of momentum is directly proportional to the force, applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and the change of the momentum acts on the direction of the applied force. जिस फोर्स में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई किए हो, उसी डायरेक्शन में आपका चेंज ऑफ मोमेंटम विल वर्क। तो ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू मोमेंटम। इनर्शिया आपके फर्स्ट लॉ के साथ रिलेटेड है ना, तो हम लोग इसीलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सो अगेन दिस विल बी डिस्कस्ड इन योर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर। प्रेशर का मीनिंग क्या है? व्हाट यू मीन बाय प्रेशर? सी, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो अच्छा जॉब चाहिए तो आपको तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स सो दैट वी कैन गाइड यू टू क्रैक द एग्जाम। तो आप यहाँ पे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड आप हमारे कोर्स को लेते हो,
तो यहाँ पे आपको अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा एंड आई विल डेफिनेटली try my best to prepare you for the science syllabus क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें 25 मार्क्स साइंस से रहता है so 7 to 8 questions from each subject physics chemistry and biology so जम के पढ़ो हमारे साथ जुड़ जाओ तो और भी अच्छा लगेगा आपको क्लास ठीक है करेक्ट आपका आंसर सही है पास्कल है प्रेशर का यूनिट और प्रेशर मींस फोर्स बाय एरिया है ना प्रेशर का मीनिंग है फोर्स बाय एरिया थ्रस्ट इज एक्चुअली इट्स अ पुशिंग फोर्स जो आपके लिक्विड्स में देखे जाते हैं है ना थ्रस्ट इज एक्चुअली द जो फ्लूइड्स या फिर लिक्विड्स में मोस्टली थ्रस्टिंग फोर्स इज इन अप्लाइड टू लिक्विड्स ओनली ठीक है टॉर आपके एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं टॉर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ठीक थर्ड लॉ इज एक्चुअली एक्शन टू रिएक्शन थ्रस्ट आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स में आता है ठीक है थ्रस्ट कम्स अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो आपके ब्यूएंसी फोर्स को explain करता है we will explain this in the chapters mechanical properties of fluid ठीक है next question is moving on to the next question 6 a driver drives his car at the constant speed and covers a distance of 288 meter in 60 seconds find the speed so आपको तो speed के बारे में पता ही होगा speed is equals to distance by time so distance आपका है 288 मीटर and your time is 60 seconds तो per second में आपका कितना हो रहा है what is the answer tell me the answer 288 by 60 so the answer is 4.8 meter per second correct very good 4.8 meter per second next moving to the next question question number 7 gravitational force is defined by the force of attraction between this question comes under gravity and center of mass chapter now ये आपको कहाँ से मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation now Newton's law of gravitation explains the force between two objects like if you have m1 and if you have m2 another object and they have a distance between them is r then the force between these two objects will be m1 m2 by r square so the force is directly proportional to the product of the mass and the inversely proportional to the square of the distance between them so obviously from the option it should be the answer two masses ठीक है gravitational force आपके दो ऑब्जेक्ट की masses के ऊपर डिपेंड करता है it directly proportional to the product of the mass मास आपका जितना बढ़ेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही बढ़ता जाएगा ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 which of the following method the molecule of a fluid transmit the heat from one place to another अब थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी फ्लूइड का मतलब क्या है मैटर कैन फ्लो कोई भी मैटर अगर फ्लो कर पाए तो वही होगा आपका फ्लूइड दैट मीन्स लिक्विड एंड गैस बोथ ठीक है अब लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है थोड़ा सा गैप्स रहते हैं उसमें लिक्विड्स में मीडियम गैप्स रहते हैं गैस में मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो यहाँ पे अगर आप किसी लिक्विड या गैस में हीट दे रहे हो हीट एनर्जी यू आर गिविंग देन क्या होता है कि द मॉलिक्यूल्स खुद वो हीट को एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह पे लेके जाते हैं जो आपके सॉलिड में पॉसिबल
नहीं है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड, ऐसे एक दूसरे के साथ पूरा जुड़े हुए रहते हैं, कोई स्पेस वहां पे गैप नहीं रहता है। तो इसीलिए सॉलिड में क्या होता है, वेन एवर यू गिव हीट एनर्जी टू इट, ये इधर उधर नहीं कर पाता है। सो व्हाट हैपन हियर कि हीट एनर्जी गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। बट लिक्विड या फ्लूइड में क्या होता है, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स खुद हीट कैरी करके लेके जाते हैं। करेक्ट, द आंसर इज कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन आपके सी ब्रीज, लैंड ब्रीज फॉर्मेशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आपके घर के वेंटिलेशन की प्रिंसिपल भी आपका ये कन्वेक्शन मेथड है। ठीक है, कंडक्शन मेथड इज द हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। ओके, कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर ऑफ सॉलिड, देन emission or respiration is not related to heat transfer. ठीक है, so this is our group D course, railway group D course, online mode. Course duration is 4 months. You will get live and recording class as well, everyday class, PDF notes, all the questions answer will be discussed, the patterns also, आपको materials भी अच्छे से मिलेंगे. So you need not to worry, we will guide you at our best. ठीक है, so what you can do, you can join us and the course fee is very minimum, so don't be late. आपके नेक्स्ट वीक से क्लास सिर्फ ऐप में ही होगा, तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा. इफ यू हैव एनीथिंग, you want to know anything more about the course and all, you can call at this number. Okay, let's move to the next subject, chemistry. So chemistry में हमारा first question क्या है? Chemistry में हमारा first question है, question number 1 is dash is a pure substance. अब substance का ये हमारे कौन से chapter से है? The question is comes from states of matter. Solid, liquid, gas, ये matter के 3 important states है. एंड आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्योर सब्सटेंस जिसमें आपका 2 चीज होता है. प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. प्योर सब्सटेंस में व्हाट यू विल हैव, आपके 2 कैटेगरी है. वन इज एलिमेंट, अनदर वन इज कंपाउंड. नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स कौन है? कैन यू गिव मी एग्जांपल? Good. The correct answer is methane. Element means carbon, sodium, potassium, calcium. These are your elements. Compounds कौन है? CO2, H2, है ना? जहाँ पे आपके elements chemically bonded है and new product are coming. They are known as compounds. तो यहाँ पे sugar solution क्या है? Sugar solution का meaning है कि sugar plus water हो सकता है. So it is a mixture. यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर. मीथेन क्या है? मीथेन है आपका CH4, कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन में एक नया सा कंपाउंड बना है. सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस. मिल्क क्या है? इट्स अ मिक्सचर. मिल्क इज अ कोलॉइडल मिक्सचर, हेटेरोजेनस कोलॉइड. एयर क्या है? एयर भी आपका हाँ emulsion है. मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ emulsion. emulsion इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड. एयर क्या है? एयर भी आपका एक मिक्सचर है जहां पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट रेशियो. ठीक है, सो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? तो फिर ओनली मीथेन, CH4. नाउ द निकनेम ऑफ मीथेन इज व्हाट? पता है आपको मीथेन का निकनेम क्या है? इट हैज अ निकनेम. वो भी क्वेश्चन आता है आपके. डू यू नो? No issues. Methane is commonly known as marsh gas. Methane is commonly known as marsh gas. ठीक है. Next is question number 2. At what temperature does gypsum get converted into plaster of Paris? Now, first let me ask you, gypsum का chemical formula क्या है? What is the chemical formula of gypsum?
Now the chemical formula of gypsum is calcium sulfate with 2H2O. ठीक है, calcium sulfate with 2H2O. Now, okay, no issues. Calcium sulfate with 2H2O. This actually will be discussed in your acid-base salt chapter. Now, calcium sulfate 2H2O, if you give heat to it, it will become calcium sulfate half H2O. Some of the water molecule will evaporate. Now this calcium sulfate half H2O is the formula of plaster of Paris. Calcium sulfate hemihydrate. The name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. ठीक है. Now this heat, ये आप कितने temperature दे रहे हैं? The temperature required to prepare from gypsum to POP is 373 Kelvin temperature. This is the amount of temperature it is required to convert gypsum into plaster of Paris. Okay. Now moving on to the next question. Question number 3. Dalton's theory was based on which rule? Now this comes from atoms molecules chapter. Now Dalton's atomic theory, जो डाल्टन को क्या बोला जाता है? जॉन डाल्टन is known as father of atomic theory, है ना? So he gave the idea about atoms. So Dalton's theory was based on mainly, which of the following is the correct option? So Dalton's theory was based on mainly mass conservation. ठीक है? Dalton's idea is based on mass conservation mainly. फिक्स्ड रेशियो भी है. फिक्स्ड रेशियो उनके पोस्टुलेट, एक पोस्टुलेट का पार्ट है. उनका जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें आपका एक पोस्टुलेट है जिसमें ये बोला गया है कि द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एट फिक्स्ड प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड. ठीक है, बट मेनली इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन. ठीक है. Now the next question, question number 4. Which element is neither metal or nor non-metal? ऑप्शन में से कौन सा मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है? Can you identify? No. आपसे पूछा गया है मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है. That means they ask you about metalloid. Okay, they are asking about metalloid. Now metalloid, यहाँ पे आपके मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम is a metal. Now P is phosphorus, which is a non-metal. Next is aluminium. This is also a metal. Now ये जो germanium है, Ge, it is known as germanium. It is known as metalloid. Now what is metalloid? The metalloids are having the both the properties, like metals के भी properties होते, non metals के भी properties इनमें होते. ठीक है, जैसे germanium, then silicon, then boron. These are your metalloids. ठीक है. So Ge is germanium. ना तो ये metal है, ना तो ये non metal है. Moving on to the next question, question number 5. What is the maximum number of electrons that can be accommodated in an atom's K shell? ठीक है. So ये question related to Niels Bohr atomic theory. ठीक है. Niels Bohr atomic model. No. Niels Bohr atomic model. No, 18 is not the correct answer. तो आपके जो शेल्स है वो है K, L, M, N, O, then P. ठीक है. Now K shell is the nearest to the nucleus, L उसके second position में, M third position, like this. So कौन से शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? उसका फॉर्मूला है 2n square. So this n means the serial number of the
shell. Serial number of the shell. So now you can tell me how many electrons can be present in K shell? No, 2n square is the formula. Focus on the formula so that you can tell me the answer. K shell means shell number 1, L shell means shell number 2, M shell means shell number 3, like this, serial number. So K shell में कितना होगा? 2 into serial number wise इसका position है 1 square, that means 2. Do you get it? समझ में आया? ये डीप नहीं है, दिस इज द बेसिक्स यू नीड टू लर्न, ठीक है। अभी ये एटम्स मॉलिक्यूल्स का बहुत ही बेसिक है। ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज इट? ये सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस है दे आर फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स ओनली, ठीक है। वहीं से मैंने कलेक्ट करके आपको यहाँ पे शो करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, how the questions are coming, so that you get an idea about the questions. Okay, not an issue, I will guide you in case in science subject. So ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से आपको पता चलेगा कि कौन से शेल में मैक्सिमम आप कितना नंबर्स पे इलेक्ट्रॉन्स लग सकते हो, ठीक है। नाउ अगर इफ आई आस्क यू इन एम शेल, तो एम शेल का सीरियल नंबर क्या है? एम शेल का सीरियल नंबर है 3। सो व्हाट यू कैन डू, 2 into 3 स्क्वायर होगा, n के जगह पे आपको 3 लिखना है। सो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 into 2 मीन्स 18। सो एम शेल में आपका कितना आएगा? 18। बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस 2n स्क्वायर फॉर्मूला। ये आपके नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल है उसका ही एक पॉइंट है, ठीक है। ये एकदम बेसिक है। सो के शेल में हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन में पूछा गया है आपको के शेल में कितना रहेगा, तो के शेल में मैक्सिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। 2n स्क्वायर इज द फॉर्मूला। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट topic, that is 6, question number 6. Mendeleev's periodic table examined the relationship between the atomic mass of elements and their dash. Now ये जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ से एकदम बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है। कि कौन से पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू लर्न कि पीरियोडिक टेबल में जो भी हिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री, उसमें आपको 3 पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे कि डोबेरेनर्स ट्रायड, देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। करेक्ट, वेरी गुड नवनीत। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो मेन प्रिंसिपल था वो था एटॉमिक मास, जो बाकी सारे पीरियोडिक टेबल में भी वही था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के पुराने जो भी पीरियोडिक टेबल थे, अप्रोचेस थे, दे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, द मेन प्रिंसिपल। उसके साथ साथ उन लोगों का, मेंडेलीव का और एक खासियत था उनका पीरियोडिक टेबल का कि he considered the physical and chemical properties both to arrange the elements in a table manner, ठीक है। and to do that sometimes he also ignored his atomic mass principle to make the periodic table. एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए उन्होंने कभी कभी एटॉमिक मास को भी कंसिडरेशन में नहीं लिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, he also considered physical and chemical properties both. Okay. Now question number 7. Which of the following properties is not of alkali? So this comes under acid, base, salt chapter. इस चैप्टर का पार्ट है ये, एसिड बेस सॉल्ट, जहां पे हम लोग बेस को लेके भी डिस्कस करेंगे। सो एसिड बेस सॉल्ट का बेस, alkali means what? Alkali means water soluble base.
वाटर सॉल्यूबल बेस, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। ठीक है, बेस आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है वाटर सॉल्यूबल, अनदर वन कैन बी वाटर सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। सो वाटर सॉल्यूबल बेस जो होते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग एल्कलीज बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज एल्कली का नहीं है? कैन यू टेल मी? एनीवन? They convert red litmus to blue. आपसे पूछा है नॉट। ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। लिटमस क्या है? लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके जरिए हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो जब लिटमस आप एसिड में दोगे, वेन एवर इट इज इन एसिड, सो एसिड में क्या हो जाता है? एसिड में ब्लू लिटमस विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड। ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। और जब आप इसको बेस में दोगे, क्या हो जाएगा? रेड लिटमस विल बी ब्लू। सो एल्कली तो आपका एक बेस ही है। सो एल्कली का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? दैट मीन्स ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये एसिड करते हैं, ये बेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। रेड किसका साइन है? रेड बहुत डेंजर का साइन है। सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एसिड मीन्स रेड, दैट मीन्स ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ एसिड। डू यू गेट माई पॉइंट? बाकी सारे ऑप्शंस मतलब बेस की प्रॉपर्टी है, जैसे कि एसिड और बेस का रिएक्शन में न्यूट्रलाइज हो सकता है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बेस आपके रेड लिटमस को ब्लू करता है, ये भी सही है। और द लास्ट वन, देयर टेस्ट इज बिटर। बेसिस का टेस्ट हमेशा बिटर होता है और एसिड टेस्ट सावर। ओके, सो प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत है बेस के बारे में, वो है ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये हमारे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग एल्गी एंड फंजाई बोथ इन इट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो लाइकेन से लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। ठीक है, लिटमस का नेचुरल कलर है पर्पल। ये आपके एसिड बेस चैप्टर के इंडिकेटर्स टॉपिक में डिस्कशन होता है। ओके, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफ्थैलीन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वी यूज देम for our identification of acid and base. Okay, so moving on to the next, formula of ethanol is, ethanol का formula क्या है? Do you know? So ethanol का formula है C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल आपके कुछ कुछ मैंने आपको थोड़ा बताया ना कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्वेश्चन का पैटर्न है कि द केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, इसी टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है या फिर कंपाउंड्स है जो हम लोग हमेशा अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि विनीगर, एसिटिक एसिड, हाँ, फिर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक दिस क्वेश्चंस।
So formula of ethanol is known as C2H5OH, or sometimes it is also written as C2H6O. ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इथेनॉल का मीनिंग, इथेनॉल कॉमनली नोन एज द ड्रिंकिंग अल्कोहल और ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल इज समटाइम्स आल्सो नोन एज ड्रिंकिंग अल्कोहल और ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। नाउ so don't wait to join our course, and to know more details about our course you can call at this number. Now next we move on to the next subject, biology. Okay, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे पढ़ना है। नाउ वी आर गोइंग मूव इनटू बायोलॉजी। बायोलॉजी सिलेबस आपका थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ लेंदी है। इसमें आपको ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। So the first question, which of the following cellular components are known as the protein factories of a cell? ये आपके सेल स्ट्रक्चर चैप्टर से है, सेल के बारे में जो चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर। नो 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 नो, प्रोटीन फैक्ट्रीज नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? ये तो बहुत फेमस है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट? Chloroplast? No. Okay, let me explain. Mitochondria is known as powerhouse of cell. ठीक है? Mitochondria is known as powerhouse of cell because it generates ATP. अब ATP क्या है? ATP हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है. It generates ATP. तो जहां से हम लोग का पावर सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं ना, उसी को। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर सप्लाई है हमारे बॉडी में। सेल के अंदर इट एक्चुअली कैरीज आउट, ये क्या करते हैं, फूड जो भी हम लोग खाए हैं उसको बर्न करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और वहीं से आपका एटीपी जो आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल है वो जनरेट होता है। दैट मीन्स एनर्जी मॉलिक्यूल मीन्स आपको पावर मिल रहा है, सो पावर जनरेशन पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। नाउ ribosome is actually known as protein factory of cell. So the correct answer is ribosome, which is known as protein factory of cell. So ribosome का main function है protein synthesis करना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। घर में खाना कहाँ बनता है आपका? किचन में बनता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ खाना बनता है? क्लोरोप्लास्ट में आपके प्लांट सेल्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। थ्रू फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, द शुगर मॉलिक्यूल, एंड ऑल द लिविंग वर्ल्ड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल, है ना, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। So chloroplast is a type of plastid, and this is actually known as kitchen of the cell. Now the next Golgi body. Golgi body क्या है? Golgi body का काम है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो तैयार हुआ है उसको सेल में किसको कहाँ भेजना है वो डायरेक्शन देता है Golgi bodies. Like whenever you suppose आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए हो तो आपको डिलीवरी कौन देता है? डिलीवरी देता है ना ई कार्ट या फिर अमेजोन डिलीवरी। तो डिलीवरी सिस्टम का काम क्या रहता है कि किसको कहाँ भेजना है, वही सिर्फ ओनली दे ओनली डू दैट ओनली। सो गोल्गी बॉडीज का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। दैट्स व्हाई गोल्गी बॉडीज आर नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, है ना, मजेदार। गोल्गी बॉडीज आर नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सो समझ में आया? राइबोसोम्स इज द करेक्ट आंसर फॉर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ अ सेल। Uh, okay.
Moving into the next question, question number 2, Mendel's law of independent assortment. ओके, ये आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स चैप्टर का पार्ट है। मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसमें हम लोग आरएनए डीएनए के बारे में बेसिक्स पढ़ते हैं और उसके साथ साथ मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, वी लर्न अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के कुछ जो एक्सक्यूज मी सॉरी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे। वन इज डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड थर्ड वन इज सेग्रीगेशन। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनका जो ये लॉ था, इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जिसमें डाई मीन्स 2 और हाइब्रिड मीन्स यू आर टेकिंग, हाइब्रिड हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पे आपके 2 डिफरेंट कैरेक्टर को आप मिला के एक बना रहे हो, है ना, दिस उसी को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। सो डाई हाइब्रिड का मतलब है आप दोनों कैरेक्टर्स को लेके क्रॉसिंग करवा रहे हो, यू आर कंसिडरिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर्स क्या था, एक था आपका सीड कलर जो कि येलो और ग्रीन हो सकता है, कंट्रास्टिंग। अनदर वन इज सीड शेप। अब सीड शेप में क्या था, रिंकल्ड एंड राउंड। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट से उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताए थे। ठीक है, सो हाउ मेनी ट्रेट्स वर देयर, ऑब्वियसली द आंसर इज 2। ओके, if you have any doubts, any question, do ask. Okay, next is, who is called father of taxonomy? Correct. Carl Linnaeus is known as father of taxonomy. He proposed the taxonomical sequence or the taxonomical technique through which we can classify animals and plants according to their characteristics. So ये आपके बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में आता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डैश डज नॉट फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। नीचे ऑप्शन में कौन सा ऑर्गन या फिर कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है इन योर ह्यूमन बॉडी। डू ट्राई, कंफ्यूज्ड हो तो क्या हुआ, डू ट्राई, आई एम हियर टू क्लियर आउट योर कंफ्यूजन, है ना। सी, लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारा ब्रीदिंग का काम करता है ना। वी इनहेल एयर एंड वी एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी इनहेल एयर एंड फ्रॉम एयर वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ वेस्ट मटेरियल। करेक्ट, देखो आप सही जवाब दिए हो। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो लंग्स क्या है, लंग्स आपके ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि एक वेस्ट मटेरियल है ना। और स्किन का काम क्या है, स्किन स्वेट्स प्रोड्यूस करते, स्किन भी आपके कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करते। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल्स, एक्सेस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन क्या है, करेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली डू द फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ये आप जो भी खाना खाए हो उसको
डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला है या फिर फ्रुक्टोज मिला है, इफ प्रोटीन से आपको एमिनो एसिड्स मिला है या फिर फैट से आपको फैटी एसिड्स मिला है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिला है उसी को एब्जॉर्ब करके ब्लड के जरिए सेल में ट्रांसपोर्ट करना, ये जो प्रोसेस है, तो एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. So small intestine is not at all related to excretion of any kinds of waste material. It is directly deals with absorption of food materials in your digestive system. ठीक. Question number 5. Which of the following is required for the formation of human blood? Correct. Iron. कहाँ पे रहता है iron? Where does it present? Good. Iron. Iron कहाँ पे रहता है आपके ब्लड में? Which component have this iron? So iron present in our blood. Bone marrow is actually a tissue from where the blood cells um, you know, gets produced or generated. ठीक है. So iron आपके blood components जो है, blood component में आपके 3 टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि WBC, white blood cell, red blood cell, and platelets. Other than these cells, we have different types of proteins in our blood. ठीक है. So cell में से RBC जो है, red blood cell, इसमें आपके एक protein that is known as hemoglobin. Hemoglobin is a component of RBC, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है एक्चुअली आयरन. दिस इज आयरन के वजह से हीमोग्लोबिन का कलर होता है आपका रेड, सो वी हैव द कलर रेड ऑफ आवर ब्लड. ठीक है. सो आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. ओके, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन में आपका आयरन रहता है. ठीक है. एंड द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज फॉर O2 एंड CO2 का एक्सचेंज. O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Hemoglobin actually carries out the oxygen and carbon dioxide gas in our body. ठीक है, transportation. The next question is the full form of ATP. ATP is our energy molecule. थोड़ी देर पहले ही बता रही थी, energy molecule which is produced inside the mitochondria. ये कहाँ पे होता है? Mitochondria में produce होता है. तो इसका full form क्या है? What is the full form of ATP? T, adenosine triphosphate. Very good. Adenosine triphosphate. ATP का full form है adenosine triphosphate. This is also known as energy currency or energy molecule of our body. Question number 7. The breathing process involves. Breathing process आपका एक mechanical process है. This is a mechanical function. And this related to respiratory system, है ना? So breathing process involves what? No, not C. Correct. Option A. Inspiration and expiration. You inhale and exhale. Inspiration means inhaling of air from which we absorb oxygen in our body. And expiration means exhale out the carbon dioxide from our body. तो ये है आपका breathing, inhale and exhale, inspiration and expiration.
और रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग चीज है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये आपके सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल में आपका जो खाना आप खाए हो, फूड, वट एवर फूड यू हैव टेकन, उसमें तो क्या रहता है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट लिए हो तो ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, ऐसे सिंपल शुगर्स होंगे। तो वही सिंपल शुगर आपके सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाने के बाद बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद इट विल प्रोड्यूस एटीपी. So respiration is the process through which you are generating ATP inside the mitochondria. ठीक है। तो ब्रीदिंग आपका एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सिर्फ इनहेल करना और एक्सहेल करना। ब्रीदिंग में आपका कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज टू डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। Question number 8. Which of the following is a basic structural and functional unit of nervous system? Correct. Neurons. Neurons are the basic structural and functional unit of nervous system. Now, nephron कौन से nervous system, कौन सा system का structural and functional unit है? Nephron. Kidney, correct. Excretory system. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Excretory system. ठीक है। न्यूरॉन का और एक क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत ही बेसिक है, वो है आपका ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल क्या है? सो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा है ना? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन्स। कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? Largest cell. I am not asking largest organ. Skin is a organ. I am asking largest cell. Anyone? No, neuron is longest. That means lengthwise. लंबाई में बड़ा है, ठीक है, लेंथवाइज। लार्जेस्ट सेल मीन्स ओवरऑल साइज में जो आपका बड़ा होगा, ठीक है। सो लार्जेस्ट सेल इज ओवम। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, ओवरी इज द ऑर्गन, ठीक है। ओवरी आपका ऑर्गन का नाम है, उसमें आपका ओवम जेनरेट होता है। सो ओवम इज योर लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? व्हाट इज स्मॉलेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इज ओवम, लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन। और स्किन है आपका लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका स्किन। Which of the following food is called body building food? किसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं? अब जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग एक चीज को तो बहुत हाईलाइट करते हैं। व्हाट इज इट? फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट। नो, कार्ब तो वो लोग कम कर देते हैं। करेक्ट, प्रोटीन। फूड रिच इन प्रोटीन्स लाइक पीज। प्रोटीन्स आपके किस में थे? एनिमल, प्लांट प्रोटीन्स, जैसे आपके सबसे बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है प्लांट प्रोटीन इज सोयाबीन। Soybean is a very good protein source.
फॉर प्लांट प्रोटीन, ठीक है। इसके सिवा नट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंटिल्स, ये आपके प्रोटीन सोर्स है प्लांट्स के, ठीक है। और एनिमल प्रोटीन्स, मीट, एग, दे आर एनिमल प्रोटीन्स सोर्सेस। सो प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके, बिकॉज इन आवर मसल एंड इन आवर ब्लड, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो है आपका प्रोटीन का, ठीक है। सो प्रोटीन इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड फॉर body building purpose and our human physiology system. No, I'm not vegetarian. आप वेजिटेरियन हो? Okay, okay. So plant proteins are easily absorbable and easy digestible, and animal proteins are little bit of difficult to digest. But ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स क्या है? हम आपके ऑप्शंस में सोयाबीन होंगे, प्लांट प्रोटीन सोर्स, ठीक है। So this is it, some sample questions for your exam. ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा चैप्टर स्टडी करना है थॉरोली, और क्वेश्चन पैटर्न्स आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला होगा, आई गेस फ्रॉम दिस डिस्कशन यू गेट द आइडिया अबाउट द चैप्टर्स एंड द क्वेश्चंस, कैसे आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है। Now, if you want to continue with us and want to continue your preparation with us, then join our course. This is for 4 months. You will get live recorded class, everyday class, and PDF notes, of course, different mock test, जो आपको preparation में बहुत help करेगा, ठीक है? So, if you have any question about it, thank you so much. So if you have any question about it, you can contact at this number. So I hope I will find you in my next class. For today, this is it. Thank you all. Have a good night and take care. Okay. See you in the next class.